Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In lecture of today, we will discuss about some most important components of the operating system. So, the operating system can be broken down into following four main components. Operating system को मंदरज़ेल four components में divide किया जाता है. First one is kernel. Second one is the device manager. Third one is the user interface, and then the device manager. So first one is kernel. What is kernel? Kernel handle the following. Kernel जो है ये मंदरज़ेल functions perform करते हैं, ठीक है? User interface, memory management, program execution or process management, and device management, file management, and data security. So कर्नेल का जो ये मंदरज़ेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इंशाल्लाह इसकी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? So what is a user interface? Each operating system has a user interface that accepts requests from the user process and interprets them for the operating system. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें यूज़र इंटरफेस होता है और जो जिसका फंक्शन ये है कि ये यूज़र से प्रोसेस से रिक्वेस्ट और कमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझता हो. So each operating system has a user interface through which a user interact with the operating system. The two most common form of user interface are यूज़र इंटरफेस की आम तौर पर दो कॉमन फॉर्म्स हैं. एक फर्स्ट वन इज़ कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड वन इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब हमारे साथ यूज़र इंटरफेस की दो फॉर्म्स है. एक फर्स्ट वन को कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है और दूसरे को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है. कमांड लाइन जिस तरह इस just the name represent commands, so the user type a command, and lines means line by line, ठीक है? So it is the type of interface in which a user type a command line by line in order to perform some specific task. So that type of this type of command line interface was used in the old operating system, but the main problem was that the user should have to remember these commands and will have to put these commands into the system exactly as it was written. So it was a very difficult task, ठीक है? Command line interface where computer commands are type line by line. ये एक ऐसा यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें यूज़र जो है कमांड जो है को एंटर करते हैं लाइन बाय लाइन. With a command line user interface, the user interact with operating system by typing commands to perform specific tasks. Command line user interface के ज़रिए यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होता है ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बाय एंटरिंग कमांड. यूज़र इंटरफेस की चीकम कमांड लाइन इंटरफेस थे नो दा दिस फॉर्म दे ची पर दी की चिकम दे यूज़र चिकम दे कमांड्स एंटर की ठीक दा लाइन बाय लाइन और द दीदा पर चेहरा मुख्तलिफ किस्म टास्क को परफॉर्म करशी नो दा ढेर मुश्किल कार वीज़ा का ची दी की यूज़र चिकम दे कमांड बा यादवी और दागे न पस पद दे सिस्टम दा हाँ शान चिकम दे एंटर की संची पकम फॉर्मेट की वी नो दा ढेर डिफिकल्ट कारो नो दा पर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की दा इंटरफेस इस्तेमाल दो लगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चिपाई की बा मुख्तलिफ कमांड चिकम दे सिस्टम ता एंटर के दिलेशु नदी मसले द हल करो दोबारा प्रोग्रामर्स ने किया प्रोग्रामर्स ने एक दूसरा इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कवर किया बिल्ट इन किया जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है. With graphical user interface, the user interact with operating system by using a mouse to access window icons and menus. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होता है किसके ज़रिए? माउस के ज़रिए.
सो इसमें माउस इस्तेमाल होती है और यूज़र जो है माउस का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है विंडो को आइकन्स को एक्सेस करने के लिए और मेनूज को एक्सेस करने के लिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वेयर द यूजुअल इन्वायरमेंट मोस्ट कॉमनली विम्प इज़ प्रेजेंट। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एक आम इन्वायरमेंट होती है जिसे विम कहा जाता है। सो दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस where the user may interact freely and very easily with the operating system. So there is no difficulties of writing some commands and remembering these commands and putting these into the operating system line by line. So it remove the drawbacks of the command line interface. सेकंड वन है जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मीन्स स्टोरेज एंड मैनेजमेंट मीन्स organization. So memory management means that how the process are organized and managed by the memory. So this task has been performed by the memory management. It decide which process are loaded into the memory when the memory space become available. So the memory management system decide that which process will be loaded into the main memory, that is primary memory, from the secondary memory when the space is available for the incoming process. मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन ये है कि जितनी भी प्रोसेस होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, जब वो प्राइमरी स्टोरेज में आते हैं तो इस प्रोसेस के लिए मेमोरी देना, ठीक है, ख़ास एक मेमोरी में ख़ास एड्रेस पर एक ख़ास जगह में स्टोर हो जाएगी। और जब वो मतलब अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करती है या मतलब कुछ उस स्पेसिफिक टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में वापस चली जाती है। सो इससे जो मेमोरी होती है वो वापस लिया जाता है। सो ये किसका काम है? मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। एलोकेट एंड डी एलोकेट स्पेस इज नीडेड। ये स्पेस को एलोकेट भी करता है और डी एलोकेट भी करता है। स्पेस एलोकेशन का क्या मतलब है? ये जब एक प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आती है तो इसे स्पेस दिया जाता है जिसे एलोकेशन कहा जाता है। डी एलोकेट का क्या मतलब है? जब प्रोसेस मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में वापस चली जाती है तो उस मेमोरी को वापस उस प्रोसेस से वापस लिया जाता है जिसे डी एलोकेशन या डी एलोकेट कहा जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट विद इन एन एड्रेस स्पेस इज जनरली कैटेगराइज एज। मेमोरी मैनेजमेंट को एक एड्रेस स्पेस में कैटेगराइज किया जाता है इज इधर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट को जनरली जो है हमारे साथ तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन को मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है और सेकंड वन को ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो जितनी भी प्रोसेस आती है वो डिमांड बेस्ड पे आती है। इसमें इसका यूज़र का मतलब है प्रेफरेंसेस शामिल होती है। और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद प्रोसेस को स्विप इन और स्विप आउट करता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू द प्राइमरी मेमोरी and from main memory back into the secondary memory. Several methods have been devised that increase the effectiveness of memory management. मेमोरी मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस की इंक्रीज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स जो है वो प्रपोज किए जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स और यूज़ विच और जो मेमोरी मैनेजमेंट की जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो दरअसल हैं। सिंगल contiguous allocation। सिंगल contiguous की मीन्स एडजेसेंट एलोकेशन। इसमें जो है प्रोसेस जो होती है ये contiguous यानी एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है। पार्टीशन एलोकेशन क्या होती है? इसमें जो है मेन मेमोरी जो है इसको मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट जिसे पार्टीशन कहा जाता है, फ्रेम सेगमेंट कहा जाता है, इसमें डिवाइड किया जाता है और उस
हर एक प्रोसेस के मुताबिक हर एक प्रोसेस को उसकी साइज़ के मुताबिक उसको सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। फेज मेमोरी मैनेजमेंट ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक होती है जिसमें प्रोसेस को जो है सेकेंडरी स्टोरेज में स्मॉल पोर्शन में डिवाइड किया जाता है पेज साइज़ के, जिसे फेज कहा जाता है, और मेन मेमोरी को फेज फ्रेम में डिवाइड किया जाता है, उसकी भी साइज़ पेज होती है। सो हर एक प्रोसेस जो है अपनी साइज़ के मुताबिक पेज फ्रेम में आती है और एग्जीक्यूट हो जाती है। सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट ये भी पेज मेमोरी मैनेजमेंट की तरह होती है, लेकिन सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है इसमें प्रोसेस और मेमोरी जो होती है इसकी डिवीजन वो फ्लेक्सिबल साइज़ की होती है, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द needs of the processes. Inshallah, we will discuss about these method in detail in the next lecture. Operating system can be divided into two broad categories of memory management. Now, operating system has been divided into two broad categories regarding memory management. Memory management पे लिहाज से operating system को दो categories की divide करेंगे. First one is the mono-programming and second one is the multi-programming. Mono means single, programming means program, and multi means multiple, programming means programming. So in mono programming, सिंगल प्रोसेस जो होती है, सिंगल टास्क जो होती है, एक सिंगल प्रोसेसर के ज़रिए एग्जीक्यूट किया जाता है विद इन द गिवन टाइम, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको एक ही वक्त में सिंगल प्रोसेसर के ज़रिए एग्जीक्यूट किया जाता है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग जो प्रोसेस होती है ये पैरेलल प्रोसेसिंग की एक किस्म होती है, और ये मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये फास्ट प्रोग्रामिंग होती है बनिस्बत मानो प्रोग्रामिंग की, ठीक है। Memory management, so here we have a diagrammatic representation, mono programming, and in the right hand side we have multi programming. In the mono programming, the given memory is divided into two parts. The upper blue part is called as operating system, and the lower yellow part is called program and data portion, ठीक है, user programs. So in case of mono programming, a single process or program may be brought from the secondary memory into the user program area, and it should be then put into the processor for execution. Where in case of multi-programming, the memory is divided into two main ports. Upper ports, which is the blue parts, is the operating system port, and the lower port, which is in the form of yellow and white color, is divided into multiple programs: program 1, program 2, program 3, program 4 up to n. So here in the main memory more than two programs are brought at the same time, and they are executed one by one through a single processor. So it has the advantages of the mono programming. Now, what is mono programming? Running a single program at a time within a single address space. Single address space में एक सिंगल प्रोग्राम को एक ही वक्त पर चलाना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना. इट इज़ ए सिंपलेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट. ये मेमोरी मैनेजमेंट की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. शेयरिंग द मेमोरी बिटवीन दैट प्रोग्राम एंड द यूज़र, जिसमें मेमोरी को प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान शेयर किया जाता है. In case of mono programming, when CPU is executing the program and input-output operation is encountered, then the program goes to input-output devices. During that time, CPU sits idle. मोनो प्रोग्राम के केस में ये है कि जब CPU जो है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता हो, रन कर रहा होता हो, और इसी दौरान एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ जाए, तो प्रोग्राम्स को या CPU को इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ, ऑपरेशन की तरफ मुंतकिल किया जाता है,
जिस दौरान CPU जो है वो फजूल बेकार बैठ जाती है। ठीक है, इसकी मिसाल ये है कि जब हम CPU पर कोई काम कर रहा होता हो और किसी इनपुटिंग की ज़रूरत होती है उस दौरान, या आउटपुटिंग की ज़रूरत होती है जिस लाइक प्रिंटिंग। सो इस दौरान जो है CPU जो होती है ये फजूल मतलब ये बेकार पड़ जाती है, कोई फंक्शन नहीं करता, और ऑपरेशन जो है इनपुट आउटपुट पर आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो इसका मेन ड्रॉबैक ये होता है कि CPU जो है वो इस दौरान फंक्शनलेस हो जाती है, क्योंकि इनपुट आउटपुट जो डिवाइस जो होती है ये स्लो होती है बनिस्बत प्रोसेसर की CPU की। Now what is multiprogramming? Multiprogramming is a form of parallel processing. ये parallel processing की एक किस्म है, in which several programs are run at the same time on a uniprocessor. ये एक पैरेलल प्रोसेसिंग की एक किस्म है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में एक सिंगल प्रोसेसर के ज़रिए एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सो उस मोनो प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक डिफरेंस है उसमें वन प्रोग्राम्स और यहाँ सेवरल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी यूनी प्रोसेसर इस्तेमाल होती है, यहाँ भी यूनी प्रोसेसर है, उसमें भी सेम टाइम पर एग्जीक्यूशन होती है, यहाँ भी सेम टाइम पर एग्जीक्यूशन होती है। Since there is only one processor, there can be not simultaneous execution of different program. चूँकि हमारे साथ एक प्रोसेसर होती है, यूनी प्रोसेसर होती है, सो हकीकत में यानी पैरेलल यानी एक ही वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम्स की मल्टीपल प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन ये इस तरह है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इस तरह है, चूँकि प्रोसेसर एक है और डिफरेंट प्रोग्राम जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है एक ही टाइम में मेन मेमोरी को लोड हो जाते हैं। सो वन बाय वन हर एक प्रोसेस जो होती है इतनी फास्टली एग्जीक्यूट हो जाती है बाय प्रोसेसर इतनी फास्टली एग्जीक्यूट करता है कि यूज़र ये कंसिडर करता है कि ये इसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, पैरेलल प्रोसेसर लगे होते हैं। वैसे एक्चुअल में इस तरह नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेसर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग इट इज़ वेरी फास्ट एंड दे कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम और अ सिंगल प्रोसेसर is so costly that the user consider that the processing has been done parallelly. One example is user can use MS Excel download application, transfer data from one point to another point, Firefox or Google Chrome browser and more at the same time. मल्टी प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं जब एक यूज़र माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी इस्तेमाल कर रहा हो एक ही वक्त में। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशन को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर रहा होता हो, और इसके साथ साथ कुछ डेटा को एक जगह पॉइंट से दूसरी पॉइंट्स पर भेज रहा हो, यानी मतलब एक कोई मेल भी कर रहा हो। इस तरह गूगल क्रोम या फायरफॉक्स से कोई ब्राउजिंग भी कर रहा हो, एंड इस तरह कोई दूसरा काम। तो ये मल्टीपल प्रोग्राम है एक वक्त में। अगर यूज़र मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम कर रहा हो, प्रिंटिंग भी कर रहा हो, इस तरह गेम्स भी खेल रहे हो, ब्राउजिंग भी कर रहा हो, कुछ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रहे हो, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। मल्टी प्रोग्राम को फिर मज़ीद दो अक़साम में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ नॉन स्वेपिंग एंड सेकंड वन इज़ स्वेपिंग। पहले को नॉन स्वेपिंग कहा जाता है और दूसरे को स्वेपिंग कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ नॉन स्वेपिंग? नॉन स्वेपिंग का मतलब ये है कि जब एक प्रोसेस जो है सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में आती है तो फिर वो प्राइमरी मेमोरी में कंप्लीट हो जाती है। प्राइमरी मेमोरी से वो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर में चली जाती है और वो दोबारा जो है सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आती। इसे नॉन स्वेपिंग कहते हैं। ठीक है, नॉन स्वेपिंग मीन्स दैट व्हेन अ प्रोसेस इज लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड टू द प्राइमरी मेमोरी, सो it will then never go back or swap out into the secondary storage from the
primary storage. So non-sweeping is further divided into two types. First one is the partitioning and second one is the phasing. What is partitioning? Partition is a logical division of hard disk. partition क्या है? ये हार्ड डिस्क की यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की लॉजिकल डिवीजन है. लॉजिकल डिवीजन का मतलब ये है कि फिजिकल नहीं होती बल्कि सिस्टम ये हार्ड डिस्क को ड्राइव करती है लॉजिकली. दैट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल सिस्टम, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेपरेट यूनिट, फाइल सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेपरेट यूनिट कंसीडर करती है. यानी इसमें ये पार्टीशनिंग में हार्ड डिस्क जो हमारे साथ होती है इसको मुख्तलिफ ड्राइव में लॉजिकली डिवाइड किया जाता है. जिस तरह हम अपने डिस्क को पार्टीशन C, D, E में डिवाइड करते हैं, इस तरह ये एक पार्टीशन होती है. और फिर हर एक पार्टीशन में हम जो है अपनी तबीयत के ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते हैं. C में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते सकते हैं, D में एक दूसरा इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरह E में एक तीसरा इंस्टॉल कर सकते हैं. सो दैट वी कैन हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम हार्ड डिस्क. इस तरह हमारे साथ हार्ड डिस्क में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की मौजूदगी मुमकिन हो सकती है. Now this is partitioning. So this is the diagrammatic representation, that is which is called dynamic partitioning. So in the left hand side we have the secondary storage device, that is hard disk, process P1, process P2, process P3 and process P4. So here memory is logically divided into four segments. First process P1 so size is memory size is 5 MB, second is 2 MB, third is 3 MB and fourth segment size is 4 MB. Similarly, the main memory is divided into two main ports. Upper portion is for the operating system and the lower portion is for the different phase frames, segment frames, that is process P1. 5 MB, 2 MB, partition 1 has 5 MB space, partition 2, partition 3 and partition 4. So these process P1 will be loaded into that partition which has a size equal to the size of the process. So 5 MB process will be loaded into partition having size of 5 MB. Similarly, process P2 having size of equal to 2 MB will be loaded into partition 2 having size equal to 2 MB, and in the same way process P3 will be loaded into partition 3 and process P4 will be loaded into partition 4. पदी की तस्वीर ची हर प्रोसेस ची कम दे द रिक्वायरमेंट मुताबिक पा ची कम दे नो मेन मेमोरी तलोड कीगी ची सुमरा दागी साइज भी. Phasing से तो what is phasing? It is a function of memory management. ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. वेयर ए कंप्यूटर विल स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, जिसमें कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करता है यानी सेव करता है और फिर इसको रिट्रीव मींस टू डाउनलोड एंड टू गेट इट from a device secondary storage to the primary storage device. So the phasing is also a memory management techniques in which the process is divided into small fixed size phases, and the main memory is divided into also a fixed size frame which is called page frame. So in this method, in this process, the given page will be loaded into the corresponding page frame from the secondary memory to the primary memory. It is important for the implementation of virtual memory. So this paging technique is very important for the implementation of virtual memory. So virtual memory concept, inshallah we will explain this virtual memory concept in the later lecture. So virtual memory is a memory which has been formed over the main memory in order to store, keep some process, or in order to load some process from the secondary storage to the virtual memory, and then these process will be uploaded, will be swept into the main memory for the execution.
So here we have a diagrammatic representation. So the process has been divided into different forts, which is called phases. So here we have 6 phases: page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, and page 6. So these pages have fixed size, okay, and these pages have been stored are kept in the secondary storage device. And the right portion, here we have a main memory. It has been divided into two parts. So the upper part is the operating system, and the lower part has been divided into different page frames, that is frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, and frame 6. So each page will be loaded into a corresponding frame according to their corresponding sizes. په دې کې تاسو وینئ چې دا سیکنډري میموري کې زموږ سره پروسس پراته دي. پروسس په مختلف پیجونو کې ډیوایډ شو او مین میموري زموږ سره په 2 سیکشنو کې ډیوایډ شوې ده. په باسني حصه کې زموږ سره اپریټنګ سیسټم وي او په لاندنۍ حصه کې زموږ سره فريمز کې ډیوایډ شوې ده. نو هر پیج به چې کوم دی خپل کورسپانډینګ فریم ته اپلوډ کیږي او د هغې ځای نه به د بیا پروسیسر ته وړاندې کیږي او ایگزیکیوټ کیږي به. Now what is swapping? Swapping, it is a mechanism in which a process can be swapped temporarily out of the main memory or moved to the secondary storage disk. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक प्रोसेस जो होती है ये आर्जी तौर पर स्विफ्ट आउट हो जाती है, यानी बाहर भेज दिया जाता है किससे, मेन मेमोरी से, किसको, टू द सेकेंडरी स्टोरेज को, एंड मेक दैट मेमोरी अवेलेबल टू अदर प्रोसेस. और इस मेमोरी को जो पहली प्रोसेस ने ऑक्यूपाई की होती है इसको किसी दूसरी प्रोसेस के लिए असाइन किया जाता है. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो प्रोसेस जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में आती है और मेन मेमोरी में आने के बाद अब वो पर्टिकुलर टाइम तक एग्जीक्यूट हो जाती है और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूशन के बाद वो जो है वो इसको दोबारा जो है मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में स्विफ्ट आउट किया जाता है. सो इस दौरान जो जिस प्रोसेस ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है इसको किसी दूसरी प्रोसेस के लिए असाइन किया जाता है. एट सम लेटर टाइम द सिस्टम स्वेप्ट बैक द प्रोसेस. कुछ टाइम बाद सिस्टम जो है इस प्रोसेस को दोबारा जो है सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में वापस लाती है, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन मेमोरी. ये सिलसिला चलता है. जो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होता है कुछ टाइम के लिए वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में आती है और जो स्पेस जो है वो डीलोकेट हो जाती है तो इसी जगह कोई दूसरा प्रोसेस जो है मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है. इस तरह ये प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाता है. इस तरह ये प्रोसेस चला जाता है, स्विफ्ट इन और स्विफ्ट आउट हो जाती है और फाइनली जो है ये हर एक प्रोसेस जो है इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है. So this is the diagrammatic representation. Here we have two main memories. In the left side we have a main memory which is divided into operating system and user space or user operating system area, and in the second part we have backing store, that is the secondary storage. So in the secondary storage we have two process P1 and process P2. So process P1, here it is clear in the diagram that process P1 which is being mentioned as 1 is swept out. So it means that this process has been firstly swept into the user space from the secondary memory, and then when it executed for some period of time then it will swept out back into the secondary memory. So the space which has been already allocated for that process, that is process P1, will be reallocated and a new process which is called process P2 will be swept into the user space or the user port area of the main memory, and it will be allocated the given memory for that process. After that after for a specific period of time it will be executed and then it again will be swept back into the secondary storage. So this process will continue until both processes become complete.
Now, what are the sweeping types? So, sweeping has been divided into two main types. So, sweeping is divided into two main types: demand paging and demand segmentation. The sweeping numsara do qismuna di yota demand paging way or the demand segmentation way. Demand paging way. What is a demand paging? A process in which the page are loaded into the memory when the page fault occur or non on demand. ये एक प्रोसेस होती है जिसमें पेजेस जो होती है ये मेमोरी में लोड की जाते हैं किस बेस पर? ऑन डिमांड बेस पर कुछ पेजेस जो है सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लोड की जाती है, या जब कोई पेज फॉल्ट वाक़ हो जाता हो तो इसी दौरान कुछ पेजेस को सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लोड किए जाते हैं. It is a process of sweeping in the virtual memory system. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में जो है प्रोसेस को स्विप इन किया जाता है. In this process all data is not moved from the hard drive to main memory. इस प्रोसेस में जितना हार्ड ड्राइव पर यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर जितना भी हमारे साथ पेजेस होते हैं, हमारे साथ डेटा होती है, इसको एक ही वक्त में मेन मेमोरी में नहीं लाया जाता. Because while using the demand paging, when some programs are getting demand then data will be transfer. क्योंकि इस डिमांड पेजिंग में जिस पेज की डिमांड होती है हमारे साथ, जिस प्रोग्राम्स की हमारे लिए ज़रूरत होती है, उस पेज को डिमांड पर सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लाया जाता है. सो डिमांड पेजिंग में क्या होता है, यूज़र जो है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम्स को डिमांड बेस पर सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लाता है पर एग्जीक्यूशन. It is a method of virtual memory management system. ये वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक तरीक़ा है. वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि मेन मेमोरी का कुछ हिस्सा जो है इसको वर्चुअल मेमोरी में डिवाइड किया जाता है और इसमें कुछ प्रोसेस को, प्रोग्राम्स को जिसको हम डिमांड बेस पर हम लाते हैं मेन मेमोरी, इसमें वर्चुअल मेमोरी में इस प्रोसेस को, इस प्रोग्राम्स को और इस पेजेस को रखे जाते हैं और फ़ौरन जो है इसको फिर एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर की तरफ भेज दिए जाते हैं. सो डिमांड पेजिंग, सो द वर्चुअल मेमोरी concept is being used in order to increase the effectiveness of the processing. It can be used when there is insufficient hardware to implement demand paging. ये उस वक्त में इस्तेमाल होती है जब हमारे साथ हार्डवेयर कम हो, यानी हमारे साथ मेन मेमोरी की जो साइज़ होती है वो कम होती है. किसके लिए? इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डिमांड पेजिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए. दफा वक्त पकारी चिकल जमसरा द वर्चुअल मेमोरी साइज डेर कमी और जमसरा चिकम प्रोग्रामों पर सेकेंडरी स्टोरेज के प्रोग्राम चिकम साइज भी अड़े ज़्यादा घट हुई नो आगा साइज प्रोग्राम चिकम भी मेन मेमोरी की ना जाएगी नो दे वजना मेन मेमोरी चिकम दे मंगा वर्चुअल मेमोरी की डिवाइड को और चिकम प्रोग्राम पकार भी कम ज़रूरी भी ना मंग द सेकेंडरी स्टोरेज ना मेन मेमोरी ता यानी दी वर्चुअल ता मेमोरी ता राउडू और बिया दा प्रोसेसर ता उड़ान दिखेगी दा प्रोसेसिंग दा पारा. The demand paging, so example of demand paging. So here we have programs, ठीक है, and others for different program on the secondary storage devices, and on the other side we have main memory which has been divided into different areas, okay, virtual memories. So each process have their own priority on the basis of demand, and on the basis of demand each process has been brought into the secondary storage from the main brought into the main storage from the secondary storage on the basis of demand. Here in this diagram, secondary memory, here we have two memories, main memory and the secondary memory. In the upper portion we have a program which is called program A, having a blue color, and in the lower portion we have a program which is called program B. So when program A is being completed, it will be swept out into the secondary memory,
and when program B as wanted to get back to into the main memory from the secondary memory, it will be swift into the main memory. فدې کې دا دو پروګرامز ورکړي دي، خو دا سویپ ان او سویپ اوټ کې دی ولر شوي دي. دا پروګرام ا چې کله ایگزیکیوټ شي څه ټایم نه پس نو دا بیا واپس سویپټ اوټ شي، سیکنډري میموري ته واپس لاړ شي. دا شان دا یلو کلر کې تاسو ته ښکاري چې دا پروګرام بی چې کوم دی دا بیا چې کله دا پروګرام ا چې کله ایگزیکیوټ شي او خپل ټایم لپاره دا وچلېږي نو دا بیا واپس میموري سیکنډري میموري ته لاړ شي کنه. نو چې کله ځای خالی شي دلته د لپاره نو دا پروګرام بی دلته مین میموري ته راشي او ایگزیکیوشن لپاره او بیا دا ایگزیکیوټ کړل شي. Demand segmentation. What is demand segmentation? The practice of analyzing demand data, often divided into smaller segment to help measure performance or improve service level. डिमांड डेटा की एनालाइजिंग की प्रैक्टिस के लिए जो हमारे साथ मेमोरी जो होती है, ये जो प्रोसेस होती है, प्रोग्राम्स होती हैं, इसको डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया जाता है जिसे सेगमेंट कहा जाता है. सो विच इज़ यूज टू हेल्प मेजर द परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए. डिमांड सेगमेंटेशन में क्या होती है, हमारे साथ जो जितनी भी प्रोग्राम्स होती हैं इसको स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड किया जाता है जिसे सेगमेंट्स कहा जाता है. और ये सेगमेंट जो होती है ये वेरिएबल साइज़ की होती है. ठीक है, इस तरह हमारे साथ जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी में भी जो मेमोरी में को भी मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, हैविंग डिफरेंट साइज विच इज़ कॉल्ड सेगमेंट्स. सो हर एक सेगमेंट को पर्टिकुलर सेगमेंट फ्रेम में लाया जाता है. In demand paging, one on-demand pages are loaded into the memory. Segment map table and segmentation demonstrate every segment address in the memory. So in case of demand segmentation, we have a segment map table and in a segment map table for each segment we have a specific address in which that segment will be loaded. The demand segmentation की देखिए यो टेबल भी चाहता है segment map table वही और पास segment map table की द हर segment दफारा पूरा information मौजूद भी चेहरा द segment पा memory की पकम से की प्रूती और पकम address पर प्रूती द वो information जी कम दे पा डिमांड सेगमेंटेशन की भी पदी की हम चिकम दे सेगमेंट चिकम दे रावाड़ी ऊपर डिमांड बेस पानी पाई की हम डिमांड रावाड़ी हो अलता चिकम साइज या फिक्स विदलता दा वो फ्लेक्सिबली देखी मते चेंजेस की देशी. Now fourth one is the process management. All process from start to shutdown. Process management क्या होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं स्टार्ट से लेकर शटडाउन तक ये प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है. क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस का क्रिएट होना और फिर इसको डिलीट, इसका डिलीशन होना, वेदर इट इज़ यूज़र और सिस्टम प्रोसेस. सिस्टम प्रोसेस हो या यूज़र प्रोसेस, उसकी क्रिएशन और फिर उसकी डिलीशन किसका काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है. प्रोसेस. Now what is a process? A process is a program in execution. A program in execution is called process. जब एक टास्क को एक प्रोग्राम को CPU की तरफ भेज दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, so it become process. The operating system must allocate resources to the processor, enable process to share and exchange information. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये प्रोसेस को जो रिसोर्स एलोकेट करता है, ठीक है, जितने भी रिसोर्स होते हैं, इनपुट रिसोर्सेज होते हैं या आउटपुट रिसोर्स होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को देते हैं. एनेबल प्रोसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. हर एक प्रोसेस को एनेबल करता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे प्रोसेस के साथ या दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर करे या एक्सचेंज करे. प्रोटेक्ट द रिसोर्स ऑफ ईच प्रोसेस फ्रॉम अदर प्रोसेस. हर एक प्रोसेस की जितनी भी रिसोर्सेज होती है वो दूसरी प्रोसेस की रिसोर्स से उसको प्रोटेक्ट करे. एंड एनेबल सिंक्रोनाइजेशन अमंग प्रोसेस. और प्रोसेस के दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, इंटरनल क्लॉक जो होती है इस प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए वो भी मेंटेन रखती है. सो प्रोसेस मैनेजमेंट, सो ही वी हैव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन.
In this process management, we have 5 states of a process, that is which is represented by a blue color. First one is ready, second one is the running state, third one is the block state, fourth one is the block suspended, and fifth one is the ready suspended. So each state has their own states. When a new process is created, it is brought into the ready state. And when in the ready state, when a process is being dispatched, it goes into the running state. So when it is completed, it is terminated. On the other hand, when some preemption occur, when the CPU is assigned to another process, then the process in the running state will be bring back into the ready state. And a process in the running state goes into another state which is called block state. And when the block state, when a process in the block state is unblocked, and it is being bring into the ready state, and after that it will be executed for the in order to complete it. And from block state, a process may be suspended, which goes into the block suspended state, which is the fourth state, or it may be resumed back from the block suspended state to the block state. And from block suspended state, when it is unblocked, then it goes into ready suspended state. And when ready suspended state is resumed, it goes back into the ready state, and this process will continue. Process management from the process process create kawal, process the CPU assign kawal, hage the resources work kawal, block state legal haga terminate kawal, hage the memory allocation work kawal. ठीक ना दागी sharing kawal, दागी information the basara exchange kawal ladina ilawa process kam de no the yobal resources kam de aga protect kawal da tool kam de da process management kar de. Now what is scheduler satawai to move a process or job from one place to another. एक प्रोसेस को या एक जॉब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, शेड्यूलर कहलाता है. सो हु इज़ ए शेड्यूलर, प्रोसेसर इज़ ए शेड्यूलर. ये काम कौन करता है, प्रोसेसर करता है. द प्रोसेसर मैनेजर यूज थ्रू टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स. प्रोसेस मैनेजर जो हमारे साथ होती है, ये दो किस्म के शेड्यूलर्स इस्तेमाल करते हैं. एक है फर्स्ट वन इज जॉब शेड्यूलर एंड द सेकंड वन इज द प्रोसेसर शेड्यूलर. नाउ व्हाट इज प्रोसेसर. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है. सिंक्रोनाइजेशन मीन्स व्हेन द इंटरनल क्लॉक ऑफ टू प्रोसेस बिकम इक्वलाइज्ड. जब दो प्रोसेस की जो इंटरनल क्लॉक होती है आपस में इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. इट हैज़ टू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की हमारे साथ दो सिचुएशंस होती है, यानी ये दो सिचुएशन में होती है. फर्स्ट वन इज़ अ डेडलॉक एंड सेकंड वन इज़ द स्टार्वेशन. व्हाट इज़ अ डेडलॉक. Deadlock means the situation where process is waiting for other process which has been held by other process. ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें एक प्रोसेस जो होती है एक दूसरी प्रोसेस के लिए इंतज़ार करती है कि वो इस रिसोर्स को छोड़ ले जो जिसको ज़रूरत होती है. ठीक है. डेडलॉक क्या होती है. डेडलॉक में इस तरह है कि एक प्रोसेस को जब एक रिसोर्स मुहैया की जाती है तो इस दौरान किसी भी दूसरी प्रोसेस को भी इस रिसोर्स की ज़रूरत होती है. लेकिन जो रिसोर्सेज एक प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है उसको किसी दूसरे प्रोसेस जो है इसको हेल्ड ऑन की होती है, उसको नहीं छोड़ता. तो इसी दौरान जो है प्रोसेस जो है डेडलॉक में चली जाती है. इट अकर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट पुट रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोसेस. अब सवाल ये है कि कब रूनुमा होती है डेडलॉक की. उस वक्त रूनुमा होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता, रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता, तो इस दौरान जो है प्रोसेस की डेडलॉक हो जाती है. इस डायग्राम में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे. व्हाट इज स्टार्वेशन. स्टार्वेशन अकर व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम पुट्स टू मेनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ए प्रोसेस.
स्टारवेशन का मतलब है क़हत। क़हत मीन्स स्टारवेशन उस वक्त आती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस पर बहुत से रेस्ट्रिक्शन रखता हो, कंस्ट्रेंट रखता हो कि आप प्रोसेस पर ये कंस्ट्रेंट होंगे, तो इस दौरान जो है प्रोसेस जो होती है एक स्टेट में चली जाती है जिसे स्टारवेशन कहा जाता है। स्टारवेशन इज़ द प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन लो प्रायोरिटी प्रोसेस गेट जेम्स्ड फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम। स्टारवेशन का मसला उस वक्त होता है जब एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो होती है उसको जाम किया जाता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता नामालूम वक्त के लिए। क्योंकि एज द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कीप एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसको सीपी की तरफ भेज दिया जाता है, उसको सीपी की तरफ एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो होती है वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है। बाज़ औक़ात इस तरह होती है कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होती है उसमें उसको क्यू में रखी जाती है और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होती है वो वैसी की तैसी रह जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। Now process management, here we have two process P1 and process P2, and we have two resources, resource R1 and resource R2. Now process P1, here we see that resource 1 is assigned to process P1, and process P1 is then again waiting for resource R2. Similarly, process P2, resource 2 is assigned to process P2, and process P2 is waiting for the resource 1. So it means that process P1 is using resource R1 and it requires a resource R2. Similarly, process 2 is using resource 2 and it needs a required resource 1. So both these processes keep their resources and they don't want to release their resources, so the process goes into state which is called deadlock state. डायग्राम की तस्वीर नहीं प्रोसेस P1 था रिसोर्स R1 वर्कला शवे दे और देता रिसोर्स R2 पकड़ दे हो दा रिसोर्स R2 चिकम दे दा हो प्रोसेस P2 तो वर्कला शवे दे और प्रोसेस P2 तो रिसोर्स R1 पकड़ दे नो प्रोसेस P1 चिकम दे प्रोसेस 1 चिकम होता वयू नो दा रिसोर्स R1 न प्रीदी और प्रोसेस P2 चिकम दे दा रिसोर्स R2 न प्रीदी the वजह the process comes status deadlock. Similarly, in the other starvation we have process and then burst time and then priority. Process 1 have burst time 10 and priority 2. Process P2 have burst time 5 and priority 2 0, and process 3 has burst time 8 and then priority 1. So according to this diagram, the high priority process will be executed first. So process P1 will be executed for the burst time of 10 millisecond, and then it will be then the process P3 will have priority of 1, so it will be executed for that burst time, and lastly the low priority process will become jammed, that is the process P2. So here we have the diagrammatic representation of the process management. Now what is the device management? It handle input to and out from attached hardware device such as device management क्या है? ये जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं और जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस के साथ अटैच होते हैं इसको मैनेज करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट इसमें इनपुट आउटपुट की जितनी भी डिवाइस होती है इसकी मैनेजेबिलिटी ये किसका काम है? ये डिवाइस मैनेजर का काम है, ठीक है। इसमें कीबोर्ड है, माउस होती है, मॉनिटर होता है, हार्ड डिस्क होती है, प्रिंटर। ये कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। सो इसकी मैनेजेबिलिटी किसका काम है? डिवाइस मैनेजर की, ठीक है।
इंश्योरिंग दैट डिवाइस ड्राइवर और प्रेजेंट एंड अप टू डेट। डिवाइस मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि डिवाइस ड्राइवर मौजूद होना चाहिए। हर एक डिवाइस की जो डिवाइस ड्राइवर होती है वो इंस्टॉल होनी चाहिए और उसको अपडेट भी होना चाहिए। अगर इंस्टॉल ना हो तो जितनी भी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस और वेदर आउटपुट डिवाइस, so it will not be able to perform its own function. And second point is that their device driver should be updated to manage and organize input output operation. So device management is also responsible in order to manage and organize all the input output operation and all input output devices, जितनी भी input output devices उसकी मैनेजेबिलिटी और इसके ऑपरेशन ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डिवाइस मैनेजमेंट की होती है। So here we have diagrammatic representation. In the lower section we have a keyboard. Should have a device driver, and then the second one is the graphic code which should have a device driver, and third one is the graphic tablet which should have a device driver. So device manager, here a device manager will enable these device to perform its operation. ठीक है। अगर कीबोर्ड का एक ड्राइवर ना हो और अगर हो भी तो अगर अपडेटेड ना हो तो कीबोर्ड will not work properly. Similarly, the graphic card will work when there is a device driver installed for it and it should be updated one. And thirdly, the graphic tablet should have a device driver installed in it, and that graphic tablet will work when there is a driver installed overhead. Now what is file management? So the file management system allow user to perform such tasks. File management system जो है ये यूज़र को अलाउ करता है कि ये मंदरजेल टास्क परफॉर्म कर सके। कौन कौन से काम फाइल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं? क्रिएशन फाइल्स की जितनी भी क्रिएशन होती है, फाइल को क्रिएट करना, एंड डायरेक्टरीज और फिर इसकी डायरेक्टरीज बनाना। हर एक फाइल की स्टोरेज के लिए ख़ास जगह होती है जिसे डायरेक्टरीज या ड्राइव कहा जाता है, जिसमें वो फाइल को रखा जाता है। रीनेमिंग फाइल्स की फिर रीनेमिंग करना। एक फ़ाइल का एक नाम होता है, फिर हम इस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो ये फाइल मैनेजमेंट के ज़रिए होती है। कॉपिंग एंड मूविंग फाइल को कॉपी करना और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, और डिलीटिंग फाइल्स को सिस्टम से डिलीट करना टेम्पररी या परमानेंटली। ठीक है। हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड एंड रिट्रीव, फाइल को किस तरह सेव किए जाते हैं और फिर इसको किस तरह रिट्रीव या डाउनलोड किए जाते हैं। हाउ फाइल्स ऑर्गेनाइज एंड लिस्टेड, फाइल को किस तरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। So files regarding file management is responsible for all the function regarding file management, whether it is its creation or renaming or copying and moving, deletion and storage and organization. Control access to file. Now how to access this file is the responsibility of the file management. अगर एक फ़ाइल एक ड्राइव पर मौजूद हो तो इसकी ये जो एक्सेस होती है वो किस तरह होनी चाहिए, किसके कंट्रोल में होनी चाहिए, ये फाइल मैनेजमेंट का काम है। सुपरवाइज इज़ द स्टोरेज ऑफ फाइल्स, और फाइल्स की स्टोरेज की जो एक निगरानी होती है, निगरानी करना ये भी फाइल मैनेजमेंट की होती है। इसको थ्रेट से बचाना। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग एंड बैकअप फाइल, इस तरह हर एक फाइल्स की बैकअप रखना कि अगर ओरिजिनल फ़ाइल जो है हमारे साथ लॉस हो जाए तो इस बैकिंग फाइल के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को वापस ले आ सकते हैं। Now what is security and privacy management? This is also a part of the kernel. It helps in implementing a mechanism that secure and protect the computer system internally as well as externally. ये एक मैकेनिज़्म के इम्प्लीमेंटेशन में मदद देता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अंदरूनी लिहाज से और बैरूनी लिहाज से प्रोटेक्ट और महफूज किया जा सके। इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, जो हमारे साथ इंटरनल सिक्योरिटी की जितनी भी इश्यूज़ है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जितनी भी इश्यूज़ होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मैनेजमेंट की होती है।
फॉर एग्जांपल पासवर्ड एंटरिंग, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडो पासवर्ड लगाते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि हमारे सिस्टम में जो है सिर्फ वैलिड यूज़र, लीगल यूज़र, ऑथेंटिक यूज़र जो है सिस्टम में दाखिल हो सके। ऑथेंटिकेशन, हम जो है किसी भी यूज़र को उस प्रोसेस में, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन के लिए हमें उसकी ज़रूरत होती है कि वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। सो इनवैलिड यूज़र आर prevented to enter into the system. Only the authentic user will be allowed to enter into the system. So prevention of one process to enter into other process jurisdiction, इस तरह एक प्रोसेस किसी भी दूसरी प्रोसेस की हदूदात में दाखिल नहीं हो सकता। किसी दूसरी प्रोसेस की जो रिसोर्सेज होती है वो इस प्रोसेस से महफूज होती है। सो दीज आर द सिक्योरिटी इश्यूज we put a password over our operating system so that a valid or authentic or authorized user may enter into a system. Similarly, we use authentication process so that only the those person which has been allowed will be enter into the system. Similarly, prevention of one process in order to intervene with the resources of the another process is being managed by the security and privacy management. Now this is the diagrammatic representation of the security and privacy. Here we have an administrator, and when he wants to enter into the system, log into the system, he should have to write his own password. Without writing the password, without knowing the password, he will not be allowed to enter into the system. Now fourth one is the device driver. So what is a device driver? It is a piece of software. ये एक सॉफ्टवेयर होती है that allow your computer operating system, जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को allow करती है to communicate with the hardware device, के हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट हो सके। द ड्राइवर इज़ रिटन फॉर, जिसके लिए उस ड्राइवर का की रिटर्न की जाती है। सो ये एक सॉफ्टवेयर होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करती है कि उसको हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सके। यानी जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो हार्डवेयर के साथ या यूज़र हार्डवेयर के साथ जब इंटरेक्शन करती है तो डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अगर डिवाइस मौजूद हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस मौजूद हो, लेकिन अगर इसमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो वो जो है आप कम्युनिकेशन जो है उस हार्डवेयर डिवाइस के साथ नहीं कर सकती। जनरली ए डिवाइस कम्युनिकेट्स विद द डिवाइस थ्रू द कंप्यूटर बस। जनरली जो है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, कंप्यूटर बस के ज़रिए डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है, विच कनेक्ट्स द डिवाइस विद द कंप्यूटर, जो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। Without device driver, the devices like it and more will not work, like keyboard, mouse, CD, DVD, printer, graphic cards and ports. डिवाइस ड्राइवर के बगैर जितनी भी डिवाइस हमारे साथ होते हैं, whether it is input device or output device, will not be allowed, will not perform its function having a device driver. Device driver ना बगैर ची कम दे सुमर ची input output device थी ना करना के। For example, mouse शो, CD, DVD, printer जितने भी होते हैं, graphic cards और जितने भी ports होते हैं, सो ये काम नहीं कर सकते उस वक्त तक जब इसका डिवाइस ड्राइवर इसमें इंस्टॉल ना हो। So this is the diagrammatic representation. So we have in the upper portion we have application, and here we have a window operating system, and then a device driver, and then a device. So a device will communicate with the operating system through the use of the driver, and then all application will interact with the operating system. ठीक है। अगर डिवाइस मौजूद हो लेकिन इसमें ड्राइवर इंस्टॉल ना हो या अपडेटेड ना हो तो हमारा डिवाइस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो जितनी भी डिवाइस होती है उसकी इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इसमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो और अपडेटेड भी हो। Now what is user interface? It is also the way through which user interact with an application or website.
ये एक तरीक़ा है। यूज़र इंटरफेस क्या है? इट इज़ तरीक़ा है जिसमें एक यूज़र जो है किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करता है। यूज़र इंटरफेस क्या है? ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है। द यूज़र इंटरफेस इज़ द पॉइंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्शन का एक पॉइंट होता है। यानी यूज़र इंटरफेस के बग़ैर ह्यूमन जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता एंड कम्युनिकेशन इन ए डिवाइस। इट हैज़ टू टाइप्स। इसकी फिर हमने पढ़े हैं कि इसकी टू टाइप्स है, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके बारे में विद ए कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस द यूज़र इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाई टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस के ज़रिए यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है एक कमांड को टाइप करते हुए। ठीक है। And with graphical user interface, the user interact with operating system by using a mouse। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है माउस का इस्तेमाल करते हुए टू एक्सेस विंडोज़ आइकॉन्स एंड माउस मीनूज़। इस गरज से कि विंडो आइकन की तरफ रसाई कर सके और इसके साथ जितनी भी मीनूज़ होती है उसकी रसाई कर सके। सो कमांड लाइन इंटरफेस जो होती है, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, ये मुश्किल होती है और इसमें हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये कमांड जो है हम लाइन बाय लाइन जो है हम एंटर करते हैं। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किसी भी कमांड की मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। वी जस्ट नीड अ माउस, हमें सिर्फ एक माउस की ज़रूरत होती है। सो ये एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देती है जिसमें एक यूज़र जो है आसानी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करती है। So here we have a diagrammatic representation user and interface. So in the left side we have a user and we have a keyboard and a monitor. So the user may put some commands through the keyboard into the CPU and the CPU then process that command and display the output. So it has been performed by the user interface. Now what is system utilities? System software that perform maintenance type tasks। ये सिस्टम यूटिलिटीज़ जो होती है ये इसको यूटिलिटीज़ भी कहा जाता है या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका काम जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क की मेंटेनेंस का काम परफॉर्म करती है, मेंटेनेंस की। आल्सो कॉल्ड यूटिलिटी, इसको यूटिलिटी भी कहा जाता है। मोस्ट बेसिक यूटिलिटीज़ कम विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर यूटिलिटीज़ जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ट इन आती हैं। मेनी थर्ड पार्टीज यूटिलिटी आल्सो एग्जिस्ट। इसके साथ साथ कुछ यूटिलिटीज़ इस तरह भी होती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नहीं होती लेकिन उसको बाद में इंस्टॉल की जाती है। मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हमारे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जी बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह होते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की यूटिलिटीज़ प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड्स करती है। इस गरज से कि मुख्तलिफ़ किस्म की सॉफ्टवेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है या हार्डवेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सके। सो सिस्टम यूटिलिटीज़ जो है हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म टास्क की जो मेंटेनेंस है उसको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स और हार्डवेयर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सिस्टम में सिस्टम को जितनी भी थ्रेड्स होती हैं इस थ्रेड्स को इंटरनल अटैक्स जो होती है सिस्टम की उसको भी इससे बचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एंटीवायरस होती है, ये एंटीवायरस भी एक सिस्टम यूटिलिटीज़ होती है। Example of utility software are antivirus, file management, and disk management and compression tools and disk cleanup tools। ये सारी जो है हमारे साथ सिस्टम यूटिलिटीज़ है। एंटीवायरस के बारे में आप जानते हैं कि ये वायरस को ख़त्म करने के लिए एक किस्म की सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। डिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कंप्रेशन टूल्स ये एक ऐसे टूल्स है जो हमारे साथ फ़ाइल की जितनी भी फाइल्स होती है अगर वो इसकी साइज़ बड़ी हो तो उसको कंप्रेस करने के लिए इसकी साइज़ को रिड्यूस करने के लिए इस टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। एंड डिस्क क्लीन ऑफ टूल्स इज़ यूज इन ऑर्डर टू
क्लीन आवर डिस्क, क्लीन हमारे डिस्क की जो जितनी भी फाइल्स होती हैं उस फाइल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है, ये डिस्क क्लीन टूल्स इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म मेंटेनेंस, सो दैट्स हो गया। So this is the final slides of this components of the operating system. I hope you will enjoy this lecture. Thanks for watching. See you next time. Allah Hafiz.